Okay. Hello everyone. Hello Zubin. How are you? Hi. I'm good. How are you? I'm good too. Hello Great. everyone. So welcome back to Strike. एंड जितने भी लोग हमें आज पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है स्ट्राइक, इट इज़ ऑल अबाउट अ स्टॉक मार्केट एनालिटिकल टूल जो कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को उनकी ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल होता है। हमने पुराने भी काफ़ी वेबिनार्स किए हैं एंड फीडबैक के थ्रू हमें पता चला कि काफ़ी लोगों को ओआई इनसाइट्स पे चाहिए थे वेबिनार्स। तो आज का ये वेबिनार स्ट्राइक ओआई इनसाइट्स पे है जिसके बारे में जुबिन आपको इस वेबिनार में बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक अप्रैल का ऑफर रन कर रहे हैं जिसमें आपको हमारे प्लेटफॉर्म 1 ईयर के लिए 5,000 में मिलेगा एंड 6 मंथ्स के लिए 3,000 में, विच इज़ अ वेरी गुड डील। तो अगर आप ये वेबिनार के थ्रू ही साइन अप करते हो तो आपको हमारी टीम तुरंत कांटेक्ट करेगी। जो भी आपका पेमेंट का लिंक है वो आपके सारे सोशल मीडियाज पे आपको अभी विद इन फ्यू मिनट्स आपको मिल जाएगा। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो हम एक फीडबैक फॉर्म भी सर्कुलेट करने वाले हैं, तो आप उस फीडबैक फॉर्म को ज़रूर फिल करिए। उसमें बस 1 मिनट लगेगा एंड वी वांट टू नो कि हम कौन से टॉपिक्स पे वेबिनार्स ला सकते हैं, कौन सा टाइम हमारे ऑडियंस के लिए अच्छा है। तो आप प्लीज़ हमारा फीडबैक फॉर्म फिल करिएगा एंड आज का वेबिनार जुबिन, लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। Okay. Let's get started. So, very good evening to all of you, my friends. Um, okay, I'm sure बहुत सारे questions होंगे subscription के लिए. Sameer, you can we'll answer each and every question. Don't worry. Um, और ड्यूरिंग द वेबिनार ऑल्सो मैं बहुत सारे टेक्निकल सवाल अगर कुछ भी होंगे तो वो लूंगा ड्यूरिंग द वेबिनार। और if there are any unanswered questions, so I will we'll spend some around 10-15 minutes towards the end of this webinar, and I'll try to make sure that I answer each and every question that is asked. Okay. So yes, let's get going. Today's topic is strike OI insights, OI open interest. Okay, तो सबसे पहले तो मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूं मैं। Here you go. Okay. All right. So ये हमारी वेब डॉट स्ट्राइक डॉट मनी ये वेबसाइट है। ये एक प्लेटफॉर्म भी हम आपके डेस्कटॉप पे इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो और ये इसका होम पेज है। और होम पे यहाँ पे बेसिकली ये जो 3 बटन्स है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये 3 में पूरा खजाना भरा पड़ा है। फर्स्ट वन इज स्कैनर्स। यहाँ पे स्पेशली कोई भी स्टॉक स्कैन करने के लिए अगर आपको कोई स्टॉक्स चाहिए, टेक्निकल स्कैनर, कैंडलस्टिक स्कैनर, वेरियस स्कैनर्स आर देयर। और जो सेकंड सेक्शन है वहां पे पूरा एनालाइज का सेक्शन है। और एनालाइज के सेक्शन में देयर इज ऑप्शंस, एंड इन ऑप्शंस देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्राइक ओआई इनसाइट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्ट्राइक ओआई इनसाइट्स पे क्लिक करता हूँ। सो इस तरीके से ये पेज ओपन अप हो जाएगा। Now, before I explain what is this page all about, एक basic कॉन्सेप्ट्स कुछ है ओपन इंटरेस्ट के, वो जल्दी से हम लोग ब्रश अप कर देंगे। जिसको आता है उसके लिए ब्रश अप होगा, जिसको नहीं आता है उसके लिए थोड़ा बहुत नॉलेज आपको इस सेशन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो थोड़ा बहुत ऑप्शंस के बारे में नॉलेज होना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, सो उसके लिए मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे डाल देता हूँ। सो ओ आई बेसिकली स्ट्राइक ओ आई का फुल फॉर्म क्या है? ओ आई का फुल फॉर्म है ओपन इंटरेस्ट। क्या फुल फॉर्म है? ओपन ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस। ठीक है, सो ओपन इंटरेस्ट क्या है? ओपन इंटरेस्ट इज बेसिकली आप एक वॉल्यूम की तरह देख सकते हो। ओपन इंटरेस्ट इज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन, ओके, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक वॉल्यूम की तरह काम करता है। और बेसिकली अगर हम लोग ओ आई इंटरप्रिटेशन में अगर हम लोग जाते हैं, सो जब भी बेसिकली प्राइस और ओ आई पे हम लोग ये देखते हैं, प्राइस एंड ओपन इंटरेस्ट रिलेशन। ओके, तो क्या क्या सिनेरियो हो सकता है? या तो कभी प्राइस ऊपर जाता है, ओके, या प्राइस नीचे जाएगा। ऑलराइट, ये दोनों में से कोई एक ही चीज होगा। ठीक है,
अभी जब प्राइस ऊपर जाता है और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जाता है, प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों ऊपर जाता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं लॉन्ग बिल्डअप, मतलब एक काइंड ऑफ अ बुलिश चीज हो गया, ठीक है। लेकिन जब प्राइस नीचे जाता है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। ये बेसिकली फ्यूचर्स में अगर हम लोग आते हैं, कोई भी एल&टी के स्टॉक में या निफ्टी के में या बैंक निफ्टी में, किसी में भी अगर आप देख रहे हो कि निफ्टी का प्राइस ऊपर जा रहा है और उसका ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, इसका मतलब एक लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब एक बुलिश फेज है ये, ठीक है। लेकिन अगर निफ्टी नीचे जा रही है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो उसके बाद और भी नीचे जा सकता है मार्केट। इस तरीके से हम लोग इसको कहते हैं। और अगर प्राइस ऊपर गया और ओपन इंटरेस्ट कम हो गया, इसका मतलब क्या, बेसिकली देखो साइकिल क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ओके, मतलब लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। अभी जिन लोगों ने लॉन्ग बिल्डअप किया होगा वो लोग अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ तो करेंगे ना। तो अगर पोजीशन अगर वो लोग स्क्वायर ऑफ करते हैं, ओके, पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो प्राइसेस थोड़ा सा नीचे आएगा। प्राइसेस अगर नीचे आया, मतलब क्या हो रहा है, देखो प्राइसेस नीचे आ रहा है, और जब प्राइसेस नीचे आ रहा है और ओपन इंटरेस्ट कम हो जाता है, ओके, पहले मान लो 100 कॉन्ट्रैक्ट ओपन थे और अभी केवल 50 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, मतलब क्या हुआ, प्राइस नीचे गिरा और उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी नीचे आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग। लॉन्ग जो हुआ है वो स्क्वायर ऑफ हुआ, मतलब उसको अनवाइंडिंग बोलेंगे, ओके। तो जब प्राइस और ओआई दोनों गिरता है तो उसको लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं। और जब इन केस अगर मान लो प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ओके, प्राइसेस गिर रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो मतलब हम लोग बोलेंगे कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। अभी जो शॉर्ट बिल्डअप हुआ है तो वो कभी ना कभी तो स्क्वायर ऑफ होगा, और वो जब स्क्वायर ऑफ होता है तो क्या होगा, मतलब शॉर्ट पोजीशन को मतलब सेल किया है उसको बाई कर रहे हैं, तो मतलब बाई करेंगे तो प्राइसेस थोड़ा सा बढ़ेगा। सो प्राइसेस अगर बढ़ता है लेकिन उसके बाद ओपन इंटरेस्ट साथ साथ में कम हो जाता है, ओके, तो उसको बोलेंगे हम लोग शॉर्ट अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। सो ये चार चीज आपको समझ में आया सभी को, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी विथ मी ऑन द सेम पेज, ऑलराइट। अभी हम लोग बात करते हैं, हम लोग फ्यूचर्स की बात नहीं करने वाले, हम लोग ये जो ओपन इंटरेस्ट जो है ना, ये हम लोग ऑप्शंस में बात करेंगे, ऑलराइट। तो ऑप्शंस में क्या क्या होता है, ऑप्शंस में होता है कॉल ऑप्शन और होता है पुट ऑप्शन। मैंने ये कॉल ग्रीन में क्यों लिखा है और पुट रेड में क्यों लिखा है, क्योंकि जब कभी कॉल में, ओके, सो बेसिकली मैं इसको दोनों ही एक काम करता हूँ, मैं दोनों ही जो है ना अ, एक ही कलर में लिखता हूँ मैं, एक सेकेंड, ऑलराइट। क्यों, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, ऑलराइट। सो देयर इज कॉल ऑप्शन और फिर देयर इज पुट ऑप्शन, ठीक है। अभी कॉल में या तो बायर्स होंगे, ओके, या तो सेलर्स होंगे, ओके, बायर्स होंगे या सेलर्स होंगे, कॉल में बायर हो सकते हैं, कॉल में सेलर हो सकते हैं, पुट में बायर हो सकते हैं और पुट में सेलर होंगे। तो जनरली जब कॉल बाई करते हैं हम लोग उसको बुलिश, अगर हमारा बुलिश फेज है, बहुत स्ट्रांगली बुलिश है, तो हम लोग कॉल को बाई करते हैं। लेकिन माय फ्रेंड्स, आज जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं ना, हम लोग पूरा इसको सेलर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग हमेशा देखेंगे, ठीक है, हमेशा सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। क्योंकि किसी ने कॉल अगर बाय किया, कोई अगर कॉल बाय करता है तो उसके सामने कोई सेल कर रहा है तो ही बाय करेगा ना, यस और नो। सिमिलरली कोई अगर पुट बाय कर रहा है तो सामने कोई तो सेल कर रहा है। अभी जब बायर की बात करते हैं हम लोग, तो बायर कौन होते हैं, दो प्रकार के लोग होते हैं स्टॉक मार्केट में, ओके।
वो दो प्रकार के होते हैं, वो है एक रिटेल पीपल, ओके, रिटेल पीपल मतलब मेरे और आपके जैसे लोग जो हमारे पर्सनल लेवल पे हम लोग खेलते हैं, और जो दूसरी तरह के लोग होते हैं वो है इंस्टीट्यूशनल पीपल। ओके, इंस्टीट्यूशनल पीपल मतलब FII या फिर DII, ओके, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो ये दो प्रकार के लोग होते हैं। अभी कॉल ऑप्शन जब हम लोग बाय करते हैं या पुट ऑप्शन जब बाय करते हैं, तो उसके लिए हमको कोई मार्जिन मनी देना नहीं पड़ता है, उसके लिए हम अपफ्रंट प्रीमियम पे कर देते हैं, ठीक है। और उसमें लिमिटेड लॉस होता है, बाइंग ऑप्शंस बाइंग में लिमिटेड लॉस होता है, जितना प्रीमियम पे किया उतना ज्यादा से ज्यादा उतना ही लॉस हो सकता है। इसलिए जनरली लोग बोलते हैं इसको कि ये लिमिटेड रिस्क वाला आइटम है, तो पैसा भी कम लगता है इसको बाई करने के लिए, लिवरेज ज्यादा मिलता है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई most of the retail people, okay, I'm understand my words very properly, I'm not showing all of them, but I'm saying most of them, majority of the retail people, they are option buyers, ओके। वो लोग प्योरली स्पेक्यूलेट करते हैं कि उन लोग को लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा तो कॉल बाय कर लेते हैं, उन लोग को लगता है निफ्टी नीचे जाएगा तो पुट बाय कर लेते हैं। लेकिन समझने की बात अगर ये है कि अगर मेजॉरिटी लोग ऑप्शन बायर्स है, तो माइनॉरिटी लोग जो है वो ऑप्शन सेलर्स है, करेक्ट। तो वो दूसरे लोग कौन है, तो वो बचे हैं इंस्टीट्यूशनल पीपल। ये इंस्टीट्यूशनल वाले वो जनरली, ओके, ऑप्शन बाइंग नहीं करते। इंस्टीट्यूशनल पीपल वो जनरली ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं, ओके। मतलब क्या, उन लोग वो लोग अपना पोजीशन हेज रखते हैं, ऑलराइट। और मार्केट में रिटेल पीपल और इंस्टीट्यूशनल पीपल, इन दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा नॉलेजेबल कौन, ताकतवर इन टर्म्स ऑफ मनी, हाँ, ओके, सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन है रिटेल और इंस्टीट्यूशंस में से? कम ऑन, आई वुड appreciate your answers also in the comment section, but obvious they are the institutional people, ओके। सो इंस्टीट्यूशनल वाले जनरली ऑप्शन सेलर्स होते हैं। तो क्या होता है, अगर वो लोग बुलिश, लोगों को कुछ अगर बुलिश स्टैंस बनाना होता है, तो कॉल बाय करने की जगह पे वो लोग पुट सेल करते हैं, ऑलराइट। और अगर उन लोग को कोई बेरिश स्टैंस बनाना है, तो पुट बाय करने की जगह पे वो लोग कॉल सेल करते हैं। क्लियर एवरीबॉडी, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? ओके। सो अभी हम लोग ने दो कॉन्सेप्ट किए, एक ओपन इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट किया, और यहाँ पे हम लोगों ने रिटेल पीपल और इंस्टीट्यूशन जनरली कॉल बायर्स और कॉल ऑप्शन बायर्स और ऑप्शन सेलर्स कौन होते हैं, तो वो देखा। अभी मैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे आता हूँ यहाँ पे, कि अगर ऑप्शंस में आपने यहाँ पे स्क्रीन में देखा होगा, राइट, यहाँ पे ये स्क्रीन तो आपने सभी लोगों ने देखी होगी, ऑप्शन चेन की स्क्रीन ये सभी ने देखी होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे स्ट्राइक प्राइजेस है, ये निफ्टी का ये है, ऑलराइट, 22,900 एट द मनी है, ऑलराइट। तो देयर आर वेरियस स्ट्राइक प्राइजेस, यहाँ पे लेफ्ट साइड में सारा कॉल का डेटा है और राइट साइड में पुट का डेटा है, ऑलराइट। सो अलग अलग स्ट्राइक प्राइजेस का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे, सो ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे ग्रीन कलर का क्या है, यहाँ पे ये अकेला ग्रीन कलर में है ना, क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। कौन सी स्ट्राइक में? तो 23,200। तो 23,200 की स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, ओके, कॉल में, ओके, ये कॉल है 23,200 के कॉल में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल लोगों ने यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल किया है, ओके, बहुत सारे लोगों ने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा है, कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सबसे ज्यादा है 23,200। सो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे कि रिटेल वालों ने शायद से बाय किया होगा, लेकिन जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन वाले हैं उन लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा। रिमेंबर, हम लोग सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो हम लोग ये मानेंगे कि 23,200 के कॉल में अगर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, मतलब 23,200 के कॉल में सेलिंग ज्यादा हुआ है, ओके। 23,200, सो मान लो ये 23,200 का लेवल है,
इसमें कॉल का सेलिंग ज्यादा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत ही कम चांस है कि मार्केट जो है इसके ऊपर जाएगा। Okay, there is a very less chance that market can go above 23,200. Why? Because call OI is highest over here. तो ये जो 23,200 का कॉल सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, इसको हम लोग बोलकर चलेंगे रेजिस्टेंस लेवल। ओके, सो ये और एक तरीका है मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए। तो जिस भी स्ट्राइक में कॉल का ओआई सबसे ज्यादा है, वो बन जाता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है। सिमिलरली पुट में सबसे ज्यादा किसका है? ये रहा 77,000। आप यहाँ पे देख सकते हो 77 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आर ओपन 22,500 के पुट के स्ट्राइक में। तो मतलब 22,500 का पुट जो है, let me just come again, 22,500 22,500 के पुट में ओआई सबसे ज्यादा है। इसका मतलब ये बन गया हमारा सपोर्ट लेवल। इज दैट क्लियर? ऑलराइट, ओके, गेटिंग सम क्वेश्चंस। DV, few questions is possible to discuss, help me out with credit same. About RRG, RMI, we will discuss it out maybe later or towards the end if we have time. We will discuss. But today's topic will stick to strike OI insights options trading. All right. So we will stick on that. So let me know up till now whatever I have explained. Have you all understood that? Any queries relating to this? How we can say that, how to find out support and resistance in the market using options data. Okay. So what do we do is, uh, can we quickly share the screen? Yeah. So what do we do is, we can quickly look at कि कहाँ पे OI सबसे ज्यादा है। इसके लिए दूसरी और एक स्क्रीन दी है होम पेज पे ही। ओके, ओपन इंटरेस्ट। ऑलराइट, सो निफ्टी ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे वी कैन से दैट, यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर के जो बार्स है ये कॉल का ओआई है। तो जहां जहां लंबे लंबे बार्स है, यू कैन से दैट दीज बिग आर वॉल्स। ओके, सो दीज आर रेजिस्टेंस लेवल। 22,900 के स्ट्राइक पे यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस है। सो द ग्रीन कलर bars over here, 23,000, 23,100, 23,200, they will act like a resistance level. All right. And the red color bars over here, they are the put. All right. So highest open interest is over here, 22,500. So this will act like a very strong support. And below that you can see is, increase or decrease in call or put OI. So we can see 23,000 के कॉल में, ओके, कल OI बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उसके पुट में OI कम हो गया। So this tells you that, okay, 23,000 is again a very strong area of resistance level. Clear? Okay. So now let's if this is clear now, let me share this particular screen with you. Now, there are few concepts in this open strike OI inside screen. There are few concepts, interpretation we have given, over here. So you can just click on funnel. There are below support, neutral, near support, near resistance, above resistance. Okay. So what does this mean? All right, support and resistance, did you all understand? Come on, quickly give me a yes in the comment section if you have understood. If you have understood support and resistance, how to find that out, quickly give me a yes in the comment section so that I can move further. Yeah, I'm trying to make things very 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 simple for you. Okay. And once you understand the concept very nicely, this particular screen that you can see, there is lots of data.
you will be able to analyze it within few seconds, I would say. And it will help you. This particular screen is so powerful, it will help you to take your decisions of buying or selling very quickly. All right. So great, fantastic. Thanks, Anup, Milinji, DV. High OI in call resistance, yes, and highest OI input is support. All right. I'll come, Prashant. I'll tell you why below support is green in color and everything. I will tell you. Don't worry. So over here in the screen, no, all the support things, whether it is near support or below support, they are all green in color. Okay, so support is considered to where we want to buy. All right. And resistance, whether it is near resistance or above resistance. All right, so they are red in color and neutral is black in color. Okay, so forget the color code of that. Okay, we will now look at everything one by one. Now, let's suppose over here, we will say first we will look at below support. Okay, so I've clicked on below support. Now over here, why is this below support? Aarti Industry price is 375. Okay, yesterday it went down by 6%. So it went down. So it has gone below support. All right. Why below support? So when we are talking about support, all right, when we are talking about support, what are we talking about? Calls or puts? Okay, let's make this thing also clear. When we are talking about support, we are talking about puts. All right. And when we are talking about resistance, we are always talking about calls. All right. So now, when anything that we see that prices have gone below support, so we have to look at the put strike. So this is the highest strike OI. Let me just zoom so that you can see it clearly. So this first a few rows over here, call strike, open interest change, put strike, open interest change. So in these strikes, there is the highest OI. So all these call strikes act like a resistance level for all their stocks, and all these put strikes, they act like a support level. Now we can see that put for 400 strike, okay, for Aarti Industry, it was highest. It was highest, but and prices have gone below. So on Thursday prices was above 400, but now it has crossed below 400 and is now trading at 375, and hence, okay, the interpretation is below support. Did you understand? Below support. Similarly, okay, similarly, we have near resistance, or sorry, above resistance. We'll talk about above resistance. So when we are talking about above resistance, we are talking about call strike. So prices has are trading above the high, about that strike where highest OI is built up. Is that clear? Is that clear? So ITC is 410, and from ITC 410.20 and 410 has the highest call OI built up. Okay. So I'll tell you, does not mean it is weak or if anything. Pankaj, just hold on to your questions. Just try to understand these concepts very clearly. Okay. First, did you understand when we are talking about below support? Why below support? Above resistance? Why above resistance? All right. Now we will talk about near resistance. So near resistance meaning what? Near resistance meaning, if this is a resistance, prices are okay. If this is a call OI, okay, where there is a highest call OI. Okay, this is the highest call OI at, let's assume, 100 rupees, 100 strike call has the highest OI, and prices are trading somewhere near 95, 96, or somewhere 98, 99, somewhere over here. Then we will say that prices are near the resistance. Similarly, if we say that okay, 90 strike ka put, okay,
has the highest OI. And if prices are trading just around 91 or 92, somewhere over here, okay, we will say it is near support. Did you understand? Near support. If prices breaks below, it will become below support. If prices breaks above this, it will become above resistance. Okay, fantastic. Now I will show you what are the bullish setups over here. So above resistance, current market price has crossed above its highest call OI. Okay, so whenever there is a above resistance, there is a rule that so you can have a thumb rule, not a to begin with. You can say we will buy call options. All right, or you can buy the stock also for those who are not trading in options, but you are comfortable trading in futures, or you are comfortable trading only in equity. Okay, so the question is, you want to find out which stocks to buy. Okay, and any stock that you are holding, do you want to exit that stock or not? Okay, so today's topic is not only for the options traders. Even the equity traders can learn how to analyze this options data and then trade in equity market. ठीक है? So this is another way to find out stocks, where to buy, where to sell. All right. So any stock where there is above resistance and market has gone above its highest call OI, below support market has gone below its highest put OI. Near support, current market price is up to 1.5% above its highest put OI, and near resistance CMP is up to 1.5%, just a little bit below the highest call OI. All right. Now, when will we buy? Okay, there are two instances where we can go and buy the stock. And before that, any doubts or questions, my friends? There are two instances where we will go and buy. All right. So, if you are looking for creating long positions, what we will do is, we want either stock has gone above resistance, all right, or near support. All right. So these are the buying scenarios. All right. Above resistance and near support. So these are the buying scenarios. Now let's talk about uh, above resistance first. All right, above resistance. So now when will we buy a stock? When the overall, we also have to look at the overall market. Okay. uh, Sometimes very good, fantastic, Anup. You asked a fantastic question. uh, so sometimes OI changes very fast. You are absolutely right. So one thing that I would like to tell you is that you can look at the screen when to analyze this particular data. So you can look at this particular screen. I would generally prefer to look at the screen after 3 o'clock in the afternoon. Okay, so if you're looking at during market hours, look after 3 o'clock. Okay, between 3 to 3:30, and try to look at BTST or STBT stocks. All right, or look at the market accordingly. Or the best time is let the market get over. All right, in the evening, whenever you are back from work, you may be trading along with your job or your business. At night, make your peaceful, make your head calm, and then analyze this particular screen the way I'll show you now. Okay, and then do all the planning. And once your planning is done, accordingly the next day, you simply take you simply execute what you have planned. So my style is, in all my webinars I've always told this thing is, from 9 to 3:30 during market hours, do not try to analyze anything in the market, because it is very fast, it's very noisy, there is lots of changes happening around. So when the market is shut, at that time try to analyze all the data, and then only execute whatever you have planned the next day. Okay. So Anup, I hope you got your answer over here. All right. So
analyze this OI data after market hours. All right, as options are derived from instrument, does OI affect the stock price? So it's like, Pankaj, both are interconnected. All right, basically derivative is the price of derivative is derived from an underlying asset, but then there are many speculations that are done in the derivatives market which also affect the underlying asset. All right, so it works both the way. How to select? Here we don't have to select the strike price right now, Milind. Right now just try to understand whether you will buy or you will sell. Okay, when we are talking about options trading, at that time, I'll tell you how to select strike price. Okay, but as of now, right now, just understand how do we decide which stock to buy or which stock to sell. Okay, the first step. All right. Okay, so before that, let me, those of you who have not used this particular platform, there's a wonderful platform. Go ahead. The link is given in the description, as Nimisha already said. You can enroll, you can subscribe to the portal for 6 months. There is 3,000 rupees subscription, and for 1 year subscription, it will be 5,000 rupees. All right, so hurry up, and you can quickly go ahead. I will explain you. There are fantastic features of these particular strike platform that is offering. All right. Now let's get back. So we will talk about the buying scenario. So we will talk about first above resistance. All right. Now let me give you one example on 18th. Yeah, you can go back also over here. So I'll go on 18th of March. Now, when you click, the step number one is you have to find out the market scenario mood. So first understand what is market. Okay, what is market doing? So when we go over here on 18th of March, you can see. So this is Nifty daily chart. Okay, I'll okay. So this is 17th of March. It had bounced back, and from the median line, it gave a gap up opening. And on the 18th March, it gave a closing somewhere around 22,800. Okay. Yes, yes, for sure. DV coming on that itself. So over here, market had given a sharp rally. It was up by 1.5% on that day. So we wanted at such times when market has given a breakout above its own resistance. So based on this chart, we can say that this was a consolidation pattern, and out of this consolidation pattern, prices Nifty जो है वो ब्रेकआउट दे दिया. ये कंसोलिडेशन पैटर्न के बाद एक ब्रेकआउट दे दिया. ठीक है. सो ऐसे टाइम पे हम लोग ढूंढेंगे कि कौन से स्टॉक्स ने अपने रेजिस्टेंस के ऊपर गए हैं. We want to find out the market. If market goes up to the upper Bollinger Band, then we want to find out stocks which can contribute and take Nifty up, right? So at such time when overall market has given a good move upside, at that time we will come over here on this particular screen and say above resistance. Clear? Step number one, have a market view. All right. Step number two, if your market view is bullish, then step number two, come to strike OI inside screen, and from the interpretation, click above resistance. Okay. Now pay attention over here, huh, my friends. Now, so this was the resistance for a particular stock. Let's say, for example, 100 rupees. Okay. Why was this resistance? Because it's call OI. Okay, why was it resistance? Because its call OI was highest. Okay, 100 call OI was highest. Now what has happened is that prices have broken past 100. All right, above resistance. So this is above resistance. Prices have broken past 100. So now what do we want is, we want that this 100 OI whose OI was highest, their OI should start unwinding, meaning it should decrease.
Okay, it should decrease by by 2 digits in percentage. When we are talking about in terms of percentage, it should come down by 2 digits, more than 2 digits, more than 10%. Okay, more than 10%. If OI is coming down, it is good. All right. So when the prices have gone above resistance, the call in which the OI was highest, that OI should decrease, okay, by double digit in percentage. All right. Now along with that, what should happen is that some above higher strike call, okay, their OI should increase. ओके, मतलब 100 की स्ट्राइक का कॉल जो है ना, जिसपे हाईएस्ट था, वो कम हो गया, और मान लो 110 की स्ट्राइक का कॉल जो है ना, वो बढ़ गया, और प्राइजेस है समवेयर अराउंड 102. सो दिस विल बी द बेस्ट केस सिनेरियो टू गो अहेड एंड बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक, एक्सपेक्टिंग कि ये 102 से अभी रेजिस्टेंस जो है वो 110 का है, और सपोर्ट जो है वो 100 रुपए का है. सो देयर इज अ 2 रुपी रिस्क एंड प्रोबेबली 8 रुपी अपसाइड. Okay, so this is the best case scenario. Let me explain how over here in real. All right, so what we will do is call strike OI change jo hai na, we will click once. All right, and we found that Kotak Bank was 2000 strike. Okay, call 2000 strike, 30% decrease in this. Okay, and prices are at 2046. All right, everybody, are you there with me? So now we can look at Kotak Bank stock. So on 18th we did the analysis. So on 19th we will go, and probably if we like the chart, we will buy that stock on 19th, right? So now once you have understood Kotak mein call OI, it has gone above its resistance on 18th. So where is 18th? 18th of March. Here we go. So this is 18th of March. On 19th of March, prices came down a little bit, and then from 1, 2, and 3 days, okay, it gave a superb rally over here. All right, so this rally was caught away over here like this. All right. Yes, as per Friday's closing, also, we will look at it, but first understand how does this work. Okay. So coming back, so what to do, my friends? First, have a market view. Next, interpretation, click and filter out above resistance. Step number 3, look at all the stocks whose call OI has sort the OI change as per the descending order. All right, so we want to focus on these stocks: Kotak, Alchem, Soft, Bank Nifty. All right, PFC, Adani, all these stocks, if you see, within next couple of in next couple of days, or maybe in a week, these stocks have given some good returns. All right, look at Bank Nifty also. So we look at charts of Bank Nifty. On 18th March, you can see that, okay, RMI was in a buy mode, and downtrend also from negative it changed to positive. So this is again confirming that, okay, yes, from 18th of March onwards, 18, 19, 20, 20. So this over here, if you would have bought a call option, or you would have bought Bank Nifty futures, okay, this was nicely captured by Strike OI Insights. Okay, clear? Now one more thing. This was above resistance. The second thing is near support level. Okay, now when will you find when anything is near support level? Okay, so basically support level is where Nifty, overall Nifty, is trading somewhere near the lower Bollinger Band, somewhere over here like this. Okay, Nifty has gone down, down, down. It is trading somewhere near the lower Bollinger Band, and from here it has given a bounce back. Correct. All right. So somewhere over here on 5th of March or something over here, you can look at it. All right. When Nifty
Nifty is over here also, somewhere near the lower Bollinger Band. All right, you can look at somewhere over here, these places near the lower Bollinger Bands. This is the area where you will look at, uh, going to options and changing the interpretation to near support. Okay, when the overall market is somewhere near the support level, so that is the place where you will change your interpretation to near support level. All right, now when we are talking about near support level, I'll take you through one more example on bank itself. All right, and that was very recently, very recently, 2nd of April. Okay, when we are talking about 2nd of April, now when we are talking about near support. So in this support level, what will we focus on, call or put? Come on, all of you answer. Huh? When we are talking about near support, what will we focus on? What will we focus on? Calls or puts? Near support. Come on, come on. When we are talking about support levels, when we are talking about support levels, what are we talking about? When we are talking about support level, we are talking about puts. We are talking about puts. No, no, we are not talking about buying a call or selling a put or anything. We are concerned with puts. This is what I'm trying to say. When we are talking about above resistance or near resistance, we will look at what is happening on the call side, which strike call, what is happening. But when we are talking about support levels, at that time we will focus on the put strikes. Okay, so what we will do is, now we want strong support, right? What is a strong support? A strong support is where the put OI is highest, okay, or the put OI addition is highest. All right. So in this case, what we will do is, we will we want put to be highest over here like this. Okay. So you can say on 2nd of April, ICICI Prudential put highest OI was changed 560 strike. Okay, was 100% almost, and prices are around 560, just a little bit above 560. It is at 566. Okay, so similarly Crompton was there, RBL Bank, Torrent Pharma, all these things were there. Okay, what caught my eye was, HDFC Bank. See, what is happening is, HDFC Bank was trading at 1802 rupees, and 1800 put strike had an increase in put. Okay, OI at 18%. All right, so this struck my eye over here. And when we are talking about HDFC Bank, if we look at the chart also, so that was the only stock which held its head high in these turbulent times. So this was 2nd April. 3rd April it came down a little bit, and right now it's up once again. So yesterday, when the entire market was bleeding, this was a stock which gave 1%. It closed 1% higher than its previous closing. All right, so in this case, what you can do is, you can sell a put. Okay, if you are bullish, you can sell a put. You can simply buy HDFC Bank stocks, equity stocks, or you can buy futures. Okay, so going long or going short, this is what we want to understand. And if we are buying something, okay, either we can buy a call option. If we are buying a call option, then remember, we will buy it for maximum a day or two, not more than that. Okay, if we are selling calls, or we are selling puts, okay, if we are bullish, we will sell puts. Okay, so in that case, we can hold on to our positions for few days, in order to take the time value. And if you're not a options trader, using this data, you can simply buy a stock or sell a stock. Am I clear? Yep. So coming back to this particular screen over here, options. um, let me give you one more example. Few days back, was on 18th. Okay,
on 18th of March, there was this federal bank. Okay, let me again sort it. So I want a higher. So federal bank 180 strike. Okay, had seen an increase in open interest over here. Okay, put open interest had increased, and stock was trading just a rupee above 180. And if you look at this particular stock from what date, once again, from 18th of March. All right, so we can look at charts from 18th of March onwards. So this was 18th of March over here. You can also look at some things like, okay, the RMI had given a buy signal over here. All right, and then the stock price went above the averages, and from there it still remained up. So this was the moment, price moment that could have been captured using Strike OI Insights data. All right, so any questions about buying? Okay, so there are two instances. I will show you the scenarios over here as well. Okay, we have seen bullish setup for options buyer. Okay, what do we want is, if the stock has gone above resistance, focus on this. Okay, if the stock has gone above resistance, then we want a reduction in call OI, double digit call OI reduction we want. All right, and if you are a bullish setup but you want to sell puts, then what we will do, we will look at near support. Okay, and we want addition, double digit put OI addition. Okay, so these were the bullish setups. Now coming to the bearish setup. So the bearish setup over here is, if you want to be a seller, meaning if you want to sell a call, you will sell near a resistance. So when the stock is near a resistance and there is a double digit call OI addition, so at that time you will look at that particular strike and you can sell call over here. Or if you're not an options trader, if you have that particular stock in your account, you can simply sell. If you are trading in futures, you can short future contracts. All right, so we will look at this example over here. If you want to find out some stocks to sell, when will you find some stocks to sell? Obviously in some current market times, like this, when the Nifty had fallen below its moving average line, it has broken its support and has gone down. So probably we can look at Nifty, maybe for a day or two it can come down a little bit further to take support at 61.8% retracement level. So this is what currently is a market bearish scenario. All right, so when we are talking about near resistance, all right, when we are talking about near resistance or near, just a second, yeah. So what we will do is, okay, we'll come over here and we will select near resistance level. All right, when was the market near the resistance level initially? So this was where market was near the resistance on 26th of March. Okay, it had touched the resistance over here and started coming down. So 25th or 26th of March we have to look at it. So we'll look at 25th of March over here. All right, and when we are talking about resistance, we want addition in call OI. All right, addition in call OI. So HCL Tech, look at this 1640 call. All right, saw the highest 181% addition in this call, and prices was trading at 1628. All right, and we can also have a look at it that 1400 put, okay, shown an increase over here, and 1620 put showed a highest OI addition. So prices are somewhere near the resistance. We can look at HCL Tech from 25th of March.
So this is 25th or 26th. So prices did not cross above its 40 EMA. It remained over here, and it also showed that the highest OI call OI was built somewhere over here only nearby, and from there it started tumbling down. All right, so this is how you can catch some stocks over here, combine them with technicals, and then take a trading decision accordingly. All right, so that was for near resistance. Now we will see below support. All right, for below support, when will we see? When the stock is falling down, when the nifty has crossed below its previous low, like this was its previous low. Nifty fell down over here, so somewhere on 24th of Feb or something like that over here, we will try to find out stocks which are gone below their support area. Okay, so accordingly, okay, 11th of Feb. What had happened on February? Look at Feb also. So here, look at this. When Nifty has broken its support level, or probably it has gone down. So currently in such scenarios, okay, uh, you can see this candle, fourth daily chart. The prices has gone. I'll hide everything for a while. I'll hide it. Okay, so over here, have a look. So prices has gone below this median line. All right. Similarly, on this day, 11th of Feb, prices had gone below its median line. So from here, we can expect Nifty can come down to touch its lower Bollinger Band. Okay, so again from here we can expect Nifty to come down and this Bollinger Band to come a little bit up. So somewhere around 22,600 is where Nifty can come down. If that happens, then we want to find out stocks which can go down, which have gone below their support area. So I'll give you an example over here. What happened on 11th of Feb? Okay, accordingly, you guys can log into Strike and check the current data, and then you can take a trade accordingly. 11th of Feb. 11th of Feb. We want stocks which are below support. All right, and when we are talking about support level, which strike, call or put, which one will we focus? When we are talking about support level, we are talking about puts, and in this put, what should happen is the put OI should decrease. Okay, if the stock is below support, put OI should decrease. Now over here, look at this. Bank of India was trading at 102.5. all right, 105 का जो पुट ऑप्शन जो था, उसमें 21% रिडक्शन आया था. all right, 105 के पुट में रिडक्शन आया था, और हाईएस्ट ओआई जो बिल्ड हुआ था वो 100 की स्ट्राइक पे ओआई बिल्टअप हुआ है. कॉल 100 के कॉल में बिल्टअप हुआ है. 105 के पुट में जो नेगेटिव ओआई जो था वो कम हो गया है. ठीक है, और प्राइसेस 105 के नीचे 102. So we will expect that this can come down towards 100 and maybe probably go below 100 also from 11th of Feb. So if we look at the chart of Bank of India on 11th of Feb, we would have taken the trade maybe later on 12th of Feb. So let's look at first what was the scenario on 11th. So this was the scenario on 11th here. On 11th it was here, and then we could have taken a trade over here, keeping the moving averages as our resistance levels. Over here 105 was the resistance, and then prices came down towards 95. It touched the lower band and then again bounced back. All right, so over here you could have benefited. So the idea is to take benefit out of these short moves, and don't try to capture exact high and exact low. All right, so rather than that, simply capture this small move over here. That is also enough. Okay, so yeah, any questions over here?
I'll also share with you. You can take snapshots of this PPT if you want. Uh, so first of all, we will look at buyers. All right, bullish setup. So you can take a snapshot if you want a bullish setup, and if you are trading only in options. So when would you buy options? When the stock has gone above their resistance level. All right, at that time you will buy a call option. All right, so what should happen is above resistance, double digit reduction in call OI, double digit reduction in call OI. All right, and for a bearish setup, all right, if you want to buy put option, what will you see? You will see stocks which has gone below support, double digit put reduction. Okay, so when the stock is above resistance or when the stock is below support, okay, when it has broken the resistance or it has broken the support, we will look at the reduction in OI. Okay, if the resistance is broken, we will see reduction in call OI. If the stock has broken below the support level, we will see reduction in put OI. Clear? Okay, then so these are the two scenarios. If the stock is somewhere near the resistance, we want to see addition in call OI, and if the stock is near the support level, we want to see addition in put OI. Clear? All right, yeah. Prashant, I don't think so we'll able to share the PPT, but yeah, you can definitely take a snapshot. I'm keeping it open. All right, for 5 seconds you can definitely take a snapshot and save it. ओके, फ्राइडे क्लोजिंग को डेटा मार्केट मंडे मॉर्निंग भी चेंज मिल सकता है. हाँ, तो अकॉर्डिंगली हम लोग फिर ट्रेड करेंगे ना मिलन जी. या सो मंडे को अभी फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं कि बेरिश मार्केट है, नेगेटिव भी खुल सकता है. और हाँ, और एक चीज है, अगर जब आप ऑप्शंस बाइंग कर रहे हो तो फ्राइडे जैसे दिन, जब उसके बाद दो हॉलीडेज है, उसके या लॉन्ग वीकेंड ऐसा कभी आ रहा है, तो वहां पे ऑप्शन बाइंग मत कीजिएगा. ओके, और एनालाइज कैसे करना है वो अभी आपको थोड़ा बता देता हूँ. सो ओवरऑल स्टैंस थोड़ा सा बेरिश है, बट बहुत ही शॉर्ट टर्म बेरिश है, कभी भी मार्केट घूम सकता है, ऐसा है. ऑलराइट, सो द बेस्ट थिंग टू डू इज कि आप ये इसका स्नैपशॉट ले लिया है, तो मैं ये भी स्क्रीन ओपन करके रख देता हूँ. ठीक है, सो द बेस्ट थिंग टू डू इज के आप बुलिश स्टॉक्स जो है वो भी आप फाइंड आउट करके रखो, और बेरिश स्टॉक्स जो है वो भी आप फाइंड आउट करके रखो. दोनों का लिस्ट बना के रखो, और फिर मंडे को जहां पे मार्केट घूम रहा है, आप वो डायरेक्शन में जाओ. अगर मार्केट बेरिश है मंडे को, तो आप जो बेरिश स्टॉक्स जो आपने ढूंढे हैं, ओके, उसको बेरिश स्टॉक्स कौन से होंगे? या तो बिलो सपोर्ट होंगे या तो नियर रेजिस्टेंस होंगे. ठीक है, और मार्केट अगर बुलिश हुआ तो कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना है? जो अबाउ रेजिस्टेंस है या नियर सपोर्ट है. ओके, सो आई होप आपने यहाँ का इन दोनों का स्नैपशॉट ले लिया हो. लेट्स सी द मार्केट कंडीशन नाउ. हेलो, एम आई ऑडिबल? Okay, am I audible? Yeah, is the screen visible? Nimisha, are you there? Okay, Yeah, great, the great. screen is also visible and you're also audible. All right, great. Thank you. Thanks for the confirmation. So now what we can do is we can first have to understand Nifty. और ये निफ्टी में व्यू लेने के लिए बहुत सारे, स्ट्राइक में भी बहुत सारे फीचर्स है जो मैं अभी आपको बताऊंगा. कि एक तो निफ्टी देखो, यहाँ से अपर बैंड से ट्रैवल होते होते नीचे आया है, और मोमेंटम अभी फिलहाल बेरिश हो गया है. लेकिन 50 और 61.8% मेरा जो ध्यान जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा 61.8% के सपोर्ट लेवल पे, जो कि आ रहा है 22,700 के आसपास. सो मोमेंटम बेरिश है, तो हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आ सकता है.
तो पहले तो निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट डेटा देख लेते हैं। सो यहाँ पे अभी हम लोग कोई इंटरप्रिटेशन ऑल कर देंगे और ये जो सर्च बटन है यहाँ पे हम लोग निफ्टी डाल देंगे। ओके, और डेट जो है वो आज का मतलब लेटेस्ट जो ट्रेडिंग डे है 4th ऑफ अप्रैल। ओके, इसको सिलेक्ट कर देंगे। सो निफ्टी निफ्टी में क्या हो रहा है, अभी फिलहाल स्ट्रैंड्स जो है वो न्यूट्रल है। ऑलराइट, तो निफ्टी का अगर हम लोग ऑप्शंस चार्ट देखते हैं, निफ्टी में ऑप्शंस चले जाते हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग इज हम लोग कंबाइंड ओआई लेंगे, मतलब सारी स्ट्राइक्स सारी एक्सपायरी को मिला करके हम लोग लेंगे। ऑलराइट, वी कैन सी के 23,000 के कॉल में सबसे ज्यादा ओआई बढ़ा है, तो ये 23,000 जो है ये निफ्टी के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, और नीचे में सबसे बड़ी लाल डंडी कहाँ पे, यहाँ पे है 22,500। लेकिन नेक्स्ट बड़ी कौन सी है, यहाँ पे है। तो 22,800 जो है, ये 22,800 विल एक्ट लाइक अ सपोर्ट लेवल। ओके, ये निफ्टी का यहाँ पे क्यों, क्योंकि उसका पुट जो है वो यहाँ पे ज्यादा है। ऑलराइट, लेकिन कॉल ज्यादा हुआ है। यहाँ पे हम लोग टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे टोटल कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज्यादा बिल्टअप हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमको बेरिश सिनेरियो दिखाई दे रही है। तो मार्केट नीचे आ सकता है, और नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो पहला उसका पड़ाव है 22,800। तो 22,800 700 ये एरिया क्रॉस करता है तो फिर 22,500 हम लोग नेक्स्ट लेवल देखेंगे। ठीक है, सो ये निफ्टी है, निफ्टी बेरिश है। सो अभी अगर हमको अगर कोई प्लान करना है तो हम लोग क्या प्लान करेंगे। सो यहाँ पे से, और ये भी देख सकते हैं कि निफ्टी नेक्स्ट 60-50 जो है, नेक्स्ट 50 मतलब निफ्टी 50 के स्टॉक्स के बाद जो और दूसरे जो 50 स्टॉक्स जो आते हैं हैवी वेट्स, वो बिलो सपोर्ट चले गए हैं। उसका इंडेक्स 61,000 है, बिलो सपोर्ट चले गए तो उसका 63,000 के पुट में रिडक्शन आ गया, देखो डबल डिजिट। ऑलराइट, और एडिशन कहाँ है 62,000 पे, तो उसके भी नीचे चला गया है ये तो। ऑलराइट, सो इट इज स्टिल बिलो सपोर्ट, सो बेरिश व्यू ही यहाँ पे बना रहे। सो नाउ अभी हम लोग निफ्टी को हटा देंगे, और बेरिश स्टॉक्स अगर ढूंढने हैं तो हम कैसे ढूंढेंगे, यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे बिलो सपोर्ट लेवल। बिलो सपोर्ट लेवल ले लिया तो हमको क्या करना है नेक्स्ट, के कौन से पुट में ओआई रिडक्शन आया है। ऑलराइट, बिलो सपोर्ट, बिलो सपोर्ट, बिलो सपोर्ट, डबल डिजिट पुट ओआई रिडक्शन, बिलो सपोर्ट डबल डिजिट पुट ओआई रिडक्शन। तो यहाँ पे बिलो सपोर्ट कर दिया, पुट का ओआई रिडक्शन डबल डिजिट में कौन से है, तो ये सारे है। तो हमारे यहाँ पे आरईसी से लेकर के टाटा स्टील तक ये सारे जो है ना, ये हम लोग बेरिश मोड में हम लोग रख सकते हैं, मतलब बेरिश लिस्ट में रख सकते हैं कि अगर मार्केट बेरिश रहा तो ये स्टॉक्स को हम लोग सेल कर सकते हैं। और उसमें से एक सिंपल सा चीज ये है कि टैरिफ वॉर जब हो रही है तो मेटल काउंटर सबसे ज्यादा अफेक्ट आया है, और मेटल काउंटर का जो सबसे शानदार नाम है टाटा स्टील, वो ये लिस्ट में आया है। क्या हुआ है, प्राइजेस 140 है, 150 के स्ट्राइक का पुट रिडक्शन हुआ है, और 160 के कॉल में ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एडिशन हुआ है, और फिर 130 के पुट जो है, 150 का पुट में रिडक्शन हो गया, और 130 के पुट में एडिशन हुआ है। तो 130 जो है वो टाटा स्टील का सपोर्ट लेवल बन गया, और 150 के नीचे ही है तो वो हमारा बन गया रेजिस्टेंस बन गया टाटा स्टील के लिए। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप आसानी से ये डेटा आप देख सकते हो और एनालाइज कर सकते हो वेरी क्विकली। ओके, तो ये एक हो गया बिलो सपोर्ट। दूसरा हमको देखना है नियर रेजिस्टेंस। नियर रेजिस्टेंस के लिए हमको देखना है कॉल ओआई एडिशन देखना है। ओके, वापस इधर आ जाते हैं। ठीक है, कहाँ गया, नियर रेजिस्टेंस, नियर रेजिस्टेंस डबल डिजिट कॉल ओआई एडिशन। ओके, बेरिश सेटअप है। सो ये सारे स्टॉक्स जो है, ओके, ये भी बेरिश सेटअप में आ गए हैं। ओके, एक्सिस बैंक 1093, ऑलराइट, 1100 के कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, तो मतलब 1100 बन गया रेजिस्टेंस ये स्टॉक के लिए।
और सपोर्ट लेवल कहाँ पे 1000 का सपोर्ट लेवल है उसका। क्यों? क्योंकि पुट 1000 के पुट में ओआई का एडिशन हुआ है। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप ये जो स्क्रीन जो है वो इमीडिएटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आप कर सकते हो। ऑलराइट, और इसमें और एक चीज आप ये ऐसा कर सकते हो काम कि यहाँ से आप आपको जो स्टॉक चाहिए ना, केवल आप उसी आप मान लो केवल आप ये 4-5 स्टॉक्स में ही आपको ट्रेडिंग करना है, तो आईसीआईसीआई बैंक देखना है, फिर रिलायंस देखना है, ओके, फिर एचडीएफसी बैंक देखना है, ओके, फिर मान लो आपने या ये जो मान लो आपने जो भी लिस्ट आपने तैयार किया है, तो वो केवल आप वो लिस्ट भी इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। ऑलराइट, और आप यहाँ पे अलग-अलग सेक्टर के अलग-अलग यहाँ पे सिंबल्स जो मन में आए केवल वही आप सिलेक्ट करें और उसी का डेटा पे आप फोकस करके आप केवल उसी में भी ट्रेड कर सकते हो। आपकी चॉइस है, हो जाएगी ये। ठीक है? सो बहुत ही बढ़िया टूल है ये। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्टॉक अगर आपको मान लो बुलिश में नज़र आ रहा है, ऑलराइट, नियर सपोर्ट है, अगर मार्केट बाउंस बैक कर गया तो हमको ये भी स्टॉक्स ढूंढने के जो अपने सपोर्ट लेवल के आसपास आ गया है। तो सपोर्ट लेवल के आसपास आ रहा है तो कौन से है, तो ये सारे आ गए इधर। ओके, और यहाँ पे ये नाम ढूंढ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि रिलायंस 1206 रुपीज पे चल रहा है। 1200 का जो पुट जो है उसमें एडिशन हुआ है, मतलब रिलायंस का 1200 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल हो गया। अभी रिलायंस इज अ हेवी वेट इन द मार्केट, तो अगर मार्केट बाउंस बैक हो रहा है तो मार्केट को ऊपर वापस अभी कौन लेकर के जाएगा? बैंकिंग तो है ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसके अलावा रिलायंस भी है जो हेवी वेट है, जो मार्केट को ऊपर लेकर के जा सकता है। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप फोकस कर सकते हो। और कोई भी स्टॉक्स में अगर आपको अगर डिटेल में चाहिए, सो फॉर एग्जांपल आप केवल इनको क्लिक कर सकते हो और यू कैन लुक एट चार्ट्स पे। हमारा ऑलरेडी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रोहित सेटअप आ जाएगा। रोहित श्रीवास्तव ने ये इंडिकेटर बनाया है RMI। ओके, रोहित मोमेंटम इंडिकेटर। ऑलराइट, तो इसलिए ये रोहित सेटअप हो गया हमारा, क्यों, जहाँ पे हम लोग बॉलिंजर बैंड्स 40 EMA और RMI इसका इस्तेमाल करके हुए हम लोग एक ट्रेडिंग सिस्टम है और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं। ऑलराइट, सो उसका डेली चार्ट का यहाँ पे सपोर्ट लेवल कहाँ पे है वगैरह वो सब आ जाएगा। जो RMI जो है वो करंटली रिलायंस का जो RMI है वो अभी फिलहाल सेल मोड में है, बेरिश मोड में है। ऑलराइट, तो इसको अभी हम लोग बाय नहीं करेंगे। जब भी बाय करेंगे, ऑलराइट, जब भी इसने पास्ट में इस तरीके से बाय नोटेशन दिया है तब भी बाउंस बैक आया है। ऑलराइट, सो हम लोग इस तरीके से ये इंडिकेटर को भी यूज कर सकते हैं। और अगर मान लो आपने इंडिकेटर से कोई स्टॉक चूज किया तो आप उसका ऑप्शंस डेटा पढ़ के फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि करना क्या है। ऑलराइट, सो इट वर्क्स बोथ द वेज माय फ्रेंड्स। ऑलराइट, फिर मुझे किसी ने वेदांता के बारे में पूछा था। वेदांता के बारे में साहिल। ओके, सो वेदांता का हम लोग ऑप्शंस का स्क्रीन पे देख लेते हैं। सो वीईडीएल यहाँ पे जैसे ही टाइप किया तो आपको पता चला कि ओके वेदांता जो है बिलो सपोर्ट गया है, 402 का भाव है। बिलो सपोर्ट मतलब पुट देखना है तो 450 के नीचे चला गया, 8% नीचे गया है। ऑलराइट, और डबल डिजिट रिडक्शन नहीं है यहाँ पे, केवल 1% से ओआई उसका घटा हुआ है। ऑलराइट, और उसके नीचे 400 के नीचे 380 के पुट में 380 के पुट में 505% एडिशन हुआ है। 380 के पुट में मतलब 380 बन गया वेदांता का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साहिल। ऑलराइट, और 400 के ऊपर 420 में 640% एडिशन हुआ है कॉल में। 420 की स्ट्राइक बढ़िया नंबर है। ठीक है, तो वो बन गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल। ओके, सो इसी तरह के आप कोई भी पहले स्टॉक आप चूज करो, आप देख लो यहाँ से कि कौन सा स्टॉक ऊपर है, नीचे है, अबाउ सपोर्ट है, बिलो सपोर्ट है, तो वो हिसाब से आप इसको यहाँ से डेटा एनालाइज करोगे और फिर अगर आप चाहो तो यहाँ से सीधा क्लिक करो
चार्ट्स पे आ जाओ वेदांता के, और यहाँ पे रोहित सेटअप है। तो रोहित सेटअप के हिसाब से आप अभी फिलहाल एनालाइज कर सकते हो कि आरएमआई ने यहाँ पे न्यू सेल ऑलरेडी दे दिया था, मार्केट ऑलरेडी नीचे चला गया है ये स्टॉक। और 380 हम लोग ने 380 की स्ट्राइक पे ओआई हाईएस्ट बिल्टअप हुआ है। तो यहाँ पे आप 380 के पास, ये रहा 380, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो ड्रॉ की है वो 380 की है। तो एज पर ओआई डेटा 380 की पुट में सबसे ज्यादा ओआई है, तो ये सपोर्ट बन करके चलेगा। तो अभी आप वेदांता को देखो कि आ रहा है क्या 380 तक, 380 पे आने के बाद यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है बाउंस बैक, तो फिर आप कंफर्मेशन एंट्री ले सकते हो और बहुत कुछ ज्यादा इसके ऊपर आप कर सकते हो। लेकिन एनालाइज करने के लिए कहाँ पे फोकस करना है, कौन से प्राइस के आसपास ज्यादा प्रोबेबिलिटी है ट्रेंड चेंज आने की, तो उससे ओपन इंटरेस्ट से भी आपका एक अच्छा एनालिसिस होगा। ओके, मोस्ट वेलकम साहिल। और कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क मी। आपको अगर मैंने जो आज समझाया उसका कॉन्सेप्ट में भी अगर आपको समझ में ना आया हो, आपको फिर से एक बार अगर देखना हो, तो लेट मी नो प्लीज। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? या इन द मीनवाइल निमिषा ने एक फीडबैक फॉर्म भी दिया हुआ है। वो फीडबैक फॉर्म प्लीज भर दीजिएगा। ओके, उसमें आपको कौन से टॉपिक्स पे आपको चाहिए वेबिनार चाहिए, उसमें आप लिख सकते हो। तो वो टॉपिक्स जिसमें जो टॉपिक्स में ज्यादा डिमांड आएगी आप लोगों की तरफ से, वो उस टॉपिक पे हम लोग प्रेजेंट करेंगे फिर। ओके, और ऑल्सो कौन सा टाइम आपको सूटेबल रहेगा। सैटरडे को आप आ सकते हो, ड्यूरिंग वीकडेज आप आ सकते हो, शाम को आ सकते हो। सो वो कुछ आपको जो भी जनरल फीडबैक अगर जो भी आपको देना है, तो आप वो फीडबैक फॉर्म में आप दे सकते हो। ओके, रंजीत कुमार पूछ रहे हैं आईजीएल में कहाँ सपोर्ट है। ओके, Anjali, it's full of great features. From where do I start for positional trades and can it be used for invest? Yes, definitely अंजलि, मैं आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उसके पहले रंजीत कुमार जी का आईजीएल देख लेते हैं। और सेम जो हम लोग हमारा जो आज का जो टॉपिक था स्ट्राइक ओआई इनसाइट्स का, तो उसी के हिसाब से हम लोग आईजीएल को साथ में मिलकर के एनालाइज पहले करते हैं। ठीक है, सो आईजीएल हम लोग हमारी स्क्रीन पे आ जाते हैं स्ट्राइक ओआई इनसाइट्स की, और यहाँ पे वेदांता को निकाल करके आईजीएल डाल देते हैं। आईजीएल भी बिलो सपोर्ट हो गया, 4% डाउन था फ्राइडे को कल। 194 195 का प्राइस चल रहा है, और 195 के पुट का एडिशन हुआ है, हमको रिडक्शन चाहिए। तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे अगर हुआ होगा, तो इस पे हम लोग आईजीएल को ज्यादा यहाँ पे इस तरीके से देखेंगे। सो यहाँ पे हम लोग को एग्जैक्टली पता चलेगा कि ठीक है 197.5 का पुट भी रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे भी पुट का रिडक्शन हुआ है, और इनफैक्ट कॉल का भी एडिशन यहाँ पे सबसे ज्यादा हुआ है। तो 210 का कॉल जो है, ओके, आईजीएल के लिए बन जाता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। लेकिन उसके पहले यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग दीवार आ रही है, विच इज एट ये रहा 200। सो 200 के कॉल के स्ट्राइक में सबसे ज्यादा ओआई बिल्टअप हुआ है यहाँ पे इमीडिएट, तो वो बन जाता है सपोर्ट। और यहाँ पे ये लेवल 195 जो है वो बन जाता है रेजिस्टेंस, जहाँ पे पुट की ओआई में सबसे ज्यादा एडिशन हुई है। ऑलराइट, सो 195 सपोर्ट और 200 रेजिस्टेंस, तो इसके बीच में जब तक खेल रहा है तब तक खेलने दीजिए। ठीक है रंजीत कुमार जी, अगर चाहे तो इसका फिर चार्ट भी आप देख सकते हो। और डेली चार्ट आईजीएल का क्या बता रहा है, मोमेंटम बुलिश है डेली चार्ट पे। ऑलराइट, और सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे 40 ईएमए, और मीडियन लाइन जो है वहां पे सपोर्ट लेवल है। सो वो सपोर्ट लेवल भी 195 पे आ रहा है, तो विच इज कोइंसाइडिंग विथ ऑप्शंस डेटा। तो
वेट करो 195 पे बाउंस बैक आ रहा है कि टूटता है, वो तो हम देखना पड़ेगा, और फिर अकॉर्डिंगली आप उस तरीके से ट्रेड ले पाओगे। ठीक है, अभी मैं आता हूँ अंजलि जी का सवाल पे कि पोजिशनल ट्रेड्स आपको अगर लेना है तो इन्वेस्टमेंट्स कैसे करें। ऑलराइट, तो पोजीशंस के लिए हमको क्या चाहिए, आपको कोई नया स्टॉक लेना है तो आपको वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होना चाहिए, वो आपको देखना है, करेक्ट। और दूसरा जो देखना है आपको, वो देखना है आपको कि मोमेंटम उसमें स्ट्रांग है कि नहीं है। ओके, भले कितना भी अच्छा कंपनी है, लेकिन अगर उसमें मोमेंटम ही नहीं है तो आपका पैसा अटक के रहेगा, राइट। तो हमको मोमेंटम भी चाहिए उसमें, करेक्ट। तो हम लोग कैसे करेंगे उसका। सो यहाँ पे आप देखो रोहित सेटअप लिखा हुआ है यहाँ पे, रोहित सेटअप। तो रोहित सेटअप के नीचे यहाँ पे स्ट्राइक वैल्यूएशन सेटअप है, तो ये स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए है। आप वैल्यूएशन सेटअप पे आप क्लिक कर दो, तो यहाँ पे नीचे जो है ना, ये जो ग्रीन कलर की ये जो लाइन है, ये वैल्यूएशन लाइन है। ये कंपनी का ईवी बाय एबिटा कितना है पिछले एक साल का, यहाँ पे पिछले एक साल का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो सेंटर की जो लाइन है, ब्लू लाइन है, वो एवरेज लाइन है। ओके, मतलब एवरेज वैल्यूएशन हो गया। ऑलराइट, ये बिलो ये नीचे है, अगर एवरेज के नीचे है मतलब उसका वैल्यूएशन लो है, अगर इसके ऊपर है मतलब हाई है। देखो, हाई वैल्यूएशंस में कभी हम लोगों को लेना नहीं चाहिए, मतलब जैसे कि यहाँ पे देखिए ये एरिया में यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, या वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ये एरिया, ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यूएशन हाई था, और प्राइजेस जो था वो यहाँ पे ये रहा, ये लेवल पे 280 का भाव चल रहा था, और फिर मोमेंटम भी यहाँ से कम होने लगा। तो 266 से आप देख रहे हो कि वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत हाई है, तो ये लेवल पे तो डेफिनेटली एंटर नहीं करना चाहिए। अगर है तो एटलीस्ट अगर मोमेंटम वीक हो गया तो यहाँ पे आप सेल करके चल सकते थे, और फिर वो प्राइजेस नीचे आया, वैल्यूएशन जो था वो एकदम से लो वैल्यूएशन पे आ गया। लो वैल्यूएशन पे आकर के मोमेंटम ने बाई सिग्नल दिया। सो दिस वाज 164 का वाला स्टॉक जो था, वो फिर 220 तक अच्छे से भाग गया। सो इस तरीके से यू कैन पिकअप के कौन सा लो वैल्यूएशन पे है, और कौन सा स्टॉक में मोमेंटम एक साथ आ रहा है। तो आप मोमेंटम और वैल्यूएशन दोनों एक साथ देख सकते हो, अंजलि जी। ओके, सो आपका कोई भी स्टॉक डाल दीजिए, यहाँ पे स्ट्राइक वैल्यूएशन सेटअप पे आ जाइए। तो ये था डेली चार्ट शॉर्ट टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए आप यहाँ पे मैक्सिमम कर दो, तो मंथली चार्ट ओपन अप हो जाएगा। और जितना भी हमारे पास डेटा है, आईजीएल के लिए डेटा हमारे पास 2015 से वैल्यूएशन डेटा है। सो वो हिसाब से ये बिलो एवरेज है, मोमेंटम अभी तक उसने बाई दिया नहीं है, तो वी विल वेट। ओके, सो इस तरीके से ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए हो गया। ओके, आई होप आप अंजलि जी आपको ये फीचर भी अच्छा लगा। ऑलराइट, और फिर और एक फीचर है कि हम लोग मैंने बताया कि स्ट्राइक ओआई इनसाइट्स यूज करने के लिए पहले आप निफ्टी का ये जान लो कि निफ्टी का डायरेक्शन क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये डायरेक्शन क्या है, ये आपको अगर जानना है तो आप वो कैसे जान सकते हो। सो देर आर फीचर्स यहाँ पे, सेंटिमेंट इंडिकेटर्स एंड डिफ्यूजन इंडिकेटर्स। ऑलराइट, सो सेंटिमेंट इंडिकेटर्स में मान लो आपको यू आर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेडर, ओके, आपको कल एक दो दिन में क्या होना है आपको ये करना है। सो यू कैन लुक एट एवरेज स्विंग और डेली स्विंग। अभी यहाँ पे एवरेज स्विंग एक मोमेंटम इंडिकेटर का एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है। तो क्या है वो अभी फिलहाल मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन ये यूज कैसे करते हैं। देखो, जब भी ये ओवर सोल्ड हो जाता है, जब भी एवरेज स्विंग जो ओवर सोल्ड हो जाता है, वहां पे ये एक प्रकार का बॉटम बना देता है। ओके, और नेक्स्ट एक या दो दिन एटलीस्ट आपको यहाँ से ग्रीन कैंडल मिल जाती है। ओके, नेक्स्ट एक दो दिन में आपको ग्रीन कैंडल मिल जाती है, और आपको प्रॉफिट हो सकता है। देखो यहाँ पे वंस अगेन, ओके, यहाँ से पॉजिटिव। ऑलराइट, और जब ट्रेंड नेगेटिव होती है,
ऑलराइट, जब ट्रेंड ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव थी, तो ये इंडिकेटर जब भी ओवर बॉट में आ जाती है, जब ये ओवर बॉट में आ जाती है, तो वहां से कुछ दिन के लिए नीचे चला जाता है। देखो यहाँ पे भी ये इंडिकेटर, भले मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके पॉजिटिव सिनेरियो दे दिया था, लेकिन ये इंडिकेटर जो था एवरेज स्विंग, वो ओवर बॉट में था। सो तो हम लोग वेट कर रहे थे कि इसको आने दो नीचे, ट्रेंड पॉजिटिव हो गई है, अभी ट्रेंड पॉजिटिव हो गई है, तो ये इंडिकेटर जब ओवर सोल्ड में आ जाएगा, ओके, शायद से मंडे को आ जाएगा, अगर मार्केट थोड़ा सा भी और नीचे खुला, ओके, ये ओवर सोल्ड में आ जाएगा। सो वहां पे पॉसिबल है कि ये लेवल के आसपास एक शॉर्ट टर्म बॉटम बन सकता है, और फिर वहां से मार्केट जो है ना एक बाउंस बैक दे सकता है अगले 2 या 3 दिन तक। ओके, सो ये एवरेज स्विंग, डेली स्विंग इंडिकेटर आपको शॉर्ट टर्म बॉटम्स और टॉप्स कहाँ पे बन सकते हैं, कौन से लेवल पे बन सकते हैं, तो आपको वो आइडिया देते हैं। लॉन्ग टर्म का देखने के लिए देयर आर वेरियस डिफ्यूजन इंडिकेटर्स आल्सो, ओके, जो मैं यूज करता हूँ। सो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबाउट 200 डे SMA, ओके, सो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबाउट 200 SMA, देखो यहाँ पे ओवर सोल्ड चला गया था, सेम मेथड वही है कि जरा ओवर सोल्ड चला गया, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा खासा बॉटम बन गया है। और ये इंडिकेटर जो है ये 2022 के बाद अभी ऊपर आया है। देखो यहाँ पे लास्ट टाइम जून 2022 में ओवरसोल्ड चला गया था, वहां पे ऐसा अच्छा बॉटम बना कि वो अभी तक वो ऑल टाइम लो ही बन गया है, अभी वहीं से मार्केट ऊपर है। सो इस तरीके का मार्केट यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये लो अभी टूटना नहीं चाहिए, यहाँ से शायद से 1-2 दिन खराब हो सकते हैं, रेड कैंडल हो सकते हैं, लेकिन ये वाला बॉटम अभी टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेंड भी पॉजिटिव हो गई है। ये वाला जो निफ्टी का जो लाइन है, लोअर लोज लोअर हाइज था, वो अभी हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। तो यहाँ से अगर घूम गया मार्केट, तो फिर और भी पॉजिटिव रह सकता है, बट वी विल हैव टू वेट फॉर 1 डे एटलीस्ट, कि थोड़ा सा जो यूएस मार्केट से ट्रम्प की वजह से जो भी बेरिश सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, जहां पे करेक्शन हो रहा है, तो उसको थोड़ा सेटल डाउन होने के लिए वेट करना पड़ेगा। मिलिंद जी, आप बहुत ही मजाकिये हो, आप पूछ रहे हो कि इंडिया चार्ट्स बेस्ट है या स्ट्राइक, दोनों ही एक ही है। स्ट्राइक इज अ पार्ट ऑफ इंडिया चार्ट्स माय फ्रेंड, ओके। स्ट्राइक जो है वो इंडिया चार्ट्स का ही प्लेटफॉर्म है, ऑलराइट। तो स्ट्राइक जो है वो टूल है जो इंडिया चार्ट्स ने बनाया हुआ है, और एक एनालिटिकल टूल है, ओके। डेली टाइम फ्रेम पे ही ये एनालिसिस करते हैं। हाँ अनूप, ये जो डिफ्यूजन और ये डिफ्यूजन इंडिकेटर और सेंटिमेंट इंडिकेटर्स है ना, वो केवल डेली टाइम फ्रेम में ही होगा, ओके। Any other doubts? I don't know whether Nimisha, you can help me out over here. If I have missed out on any questions, you can feel free to ask me on behalf of the viewers. No, I think you covered almost all हाँ the questions. Yeah, am I audible? हाँ, yep. Yeah, yeah. I think that you have like almost covered all the questions that we had. And everyone, Okay. as we mentioned in the beginning as well, do fill out the feedback form and do not forget to avail this amazing offer that you have for the 1 year, as we say, is for 5,000 and 6 months is for 3,000. The link is there on all the platforms. If you have joined through Twitter, it is there on Twitter. If you have joined through YouTube, it is there on YouTube. Please go and just sign it up and do the payment. Okay, in the meanwhile, I'll take one question. Pankaj ji has asked, any filter to sort a 3 candle swing? Okay, basically,
Yeah, we have some scanners over here. The first part over here, when you click on scanners, we have candlestick scanner. And in this candlestick scanner, if you want, say, bullish reversal scanners, so on fourth, you can say that, okay, HDFC Bank had given a spinning top, you know, bullish doji star in LTF, something like this. All right. If you want bullish continuation pattern, so there were no bullish continuation patterns on fourth. Bearish continuation, lots of patterns of bearish. So there were Marubozu candles. Marubozu candle is something which there is no shadow on the top. Okay, it is a thick, long candle with a long shadow at the bottom. So it's a bearish candle out here. And similarly, bearish reversal. So these are some candlestick patterns. Evening star in Tata Motors. Yeah, something like this. Okay, so Tata Motors is bleeding gap down and completely down near the support. So again, if you find something like this on this was on third, sorry, on fourth. So if you see that, okay, there is some bearish pattern in any of the stock that you like over here, let's say BPCL, bearish engulfing pattern. So you can go to BPCL, or you can come to the options chart, options segment over here. And in this option segment, you can click on BPCL, and hey, it's near support. Hello. All right, it's near the support level. All right, 280. So support level, we look at the put. So 280.10, 280 put has a decreasing OI. So we can say that 280 is a very weak support. All right. Then what we can do is we can go further, look at BPCL. uh, so the put OI is very less compared to call OI. So yes, this is a bearish pattern, and if the price goes below 280, it can still go down further. Okay, so something like this, you can. So so there are two things. You come to strike OI insights page, you find out stocks, do the technical analysis, and then take a decision. That is one way. Or you do the technical analysis first, use the scanner first, and then confirm that with strike OI inside screen, and then take a decision. So it works both the ways. Okay. And that's why sentiment indicators, diffusion indicators we have for strike valuation setup for investors. And if you want to dig deep in investment also, you can simply, there are fundamentals over here, you can dig deep into it. You want to look at results, just open up. You want to see last from March 2015 to till date, so around 10-year data we have. All right, annually, or you can look at quarterly. Now if you want to look at growth percentages, so you can say that, okay, on December 2024 there was 2% reduction in operating revenues. So something like this. You want to look at charts, you can look at charts of operating revenues. You can add net profit over here as well. So you'll say that, okay, revenues are good, profit was good over here, but then came down. Now profit is again up. So some all sorts of things can be done over here, even as a for a value investor. We have various financial ratios which we have divided into various parts. So there is so strike platform is for everybody, for investors, for options traders, for equity traders, short term, long term, intraday. All right, but yes, one thing that I will always tell you is, even if you are an intraday trader, I also trade sometimes intraday. But I will never try to analyze market from 9 to 3:30. Okay. I will try to find out stocks, for my personal trading only after 3:30. Okay, especially on, if you are a swing trader, Saturday and Sunday are the best time to do your analysis. Take 1 hour out, okay, and do your analysis, keep things ready, and then enjoy your weekend with your loved ones. That is the best thing to do. Yeah.
So my friends, any other questions on all any of the topic that we have discussed today? uh, any questions for subscription, feel free to ask us. All right. 1 year subscription if you take today using the description link, the link given in the description, it will be around 5000 rupees. It will be 5000 rupees, but generally if you go on the website, 5600 rupees is for 1 year subscription. So you will save on your 600 rupees if you enroll and subscribe from the link given in this particular webinar. All right. This is especially for those who are viewing our webinar. This offer is for them. All right. And if you subscribe for 6 months, 3000 rupees. All right. Yes. Thank you, Sachin. At the moment, Ashok, no, strategy builder is not there for options. At the moment, on strike, strategy builder is not there. Okay, then, yeah, Nimisha, if there are no further questions, can we wind up? Yes, yes. And Okay. I think we have one last question. It says, can we analyze commodities? No, on Strike platform we have only NSE listed stocks data. All right. Yeah. So just understand NSE listed stock data. So any stock which is not listed on NSE, we will not be able to have the data on Strike platform. One last question is there. Uh, If you trade only index options and futures, which are the must known features for the money, for the strike money? if you trade only index options and futures, so that is Nifty, Bank Nifty. So for that, there is one more option that you had. Last week we had a webinar on ratio charts. So let me share my screen once again. Who Poonam ji? Okay. So there is this option over here called as ratio charts. You can can viewers go to the YouTube channel, and it's there only, right? The webinar that we had recorded last week. So over there we have this ratio charts which says that if the ratio is going up, okay, it means that bank nifty, this is a ratio of bank nifty divided by nifty. All right. So it means that bank nifty, if this ratio is going up, it means bank nifty is outperforming nifty. Okay. So anything which is outperforming, we will go long in that, and which is underperforming, we will go short in that. So if you would have created a long position in bank nifty over here, and somewhere, let's say over here on 11th of March. Yeah, just a second. Yeah. So on 11th or 12th of March, if you would have created a long position in Bank Nifty, looking at this ratio chart, 48,000 से लेकर के 51,500 approximately. So that is how much points? 51,500 is current, minus 48. So you would have got 3,500 points multiplied by 30 is the lot size of Bank Nifty. So 1,05,000. And if you would have taken Nifty, let me take the Nifty chart over here. So the idea was to short on what was the date? Just a second.
11th of March, 12th of March. Yeah, this was 11th and 12th of March. So it was somewhere 22,400, 22,400 minus 22,900 currently. So 500 points you would have lost over here, multiplied by 75 is the lot size. So 37,000 rupees you would have lost in Nifty. Okay, by shorting Nifty. So looking at the ratio charts, it is like, you buy one index, you sell another index, and you have a hedged position. All right, so this particular ratio charts helps you a lot. Okay, if you're trading only in index futures and options. All right, so that is one thing which is already there on the Strike platform, ratio charts. Then you also have RRGs. In RRG, you can analyze various indices compared to, so you can compare various indices and look at, which index is performing well. So we can say that, okay, private bank, PSU bank, they are in the leading quadrant. So they are outperforming the benchmark Nifty 50. Okay, so in that case, you can, look at, these sectors. Financial, fin Nifty is there. What is financial services doing? It's going up. So arrow is going up, meaning it is outperforming the Nifty. So you can look at all these things. We have the entire futures data over here, in which stocks there is long built up, short covering, long unwinding. Then we have our rollover data. All right, if you want to look at open interest data over here, so this is a rollover indicator. Open interest, so rollover indicator is something that you look only during the uh, near the expiry. So there is this OI interpretation chart over here which we have given. So for future traders, this is also a good fin Nifty. See, there is fin Nifty, there is long built up. All right, for other rest of the stocks, there is short built up. So fin Nifty again is kind of trying to outperform Nifty. All right. Yes, Sachin, we will definitely, we keep having such webinars. So in the feedback form, you can say that, okay, I want to learn RRG, and we will come out with a webinar on RRG, explaining what RRG is all about. So accordingly, see, every Tuesday, Thursday, and Saturdays, we will be coming out with webinars. So you guys can, send you can fill the feedback form and tell us that, which topics you would like to cover. And wherever there is more demand for that particular topic, we will come out with that topic, and we will teach you. All right, any doubts in using Strike, you can come, you can ask me questions directly over here itself, and I'll try to explain you how to use. So one of the topic we have already planned is how to use the platform correctly, for the beginners who are using it. So we will definitely be there. Yeah. So, my friends, that was my time now. I wish you all the very best. Have a great weekend ahead, and don't try to don't forget to subscribe to Strike platform. All right. Just before I go, for 1 year subscription it's 5,000 rupees, and for 6 month subscription it's 3,000 rupees. So go ahead, subscribe to Strike right now, and happy analysis, happy trading. Bye bye. See you.